Welcome to JK Academy, my dear friends, students, and future leaders of India. I want to begin today by asking you a simple question. How do you spend your free time? Do you spend it scrolling endlessly on social media, watching random videos, or lying around thinking that you don't have enough opportunities? Or do you spend it investing in yourself, in your skills, in your growth, and in your future? Remember this, the way you spend your free time decides the way you will spend your entire life. Every successful person you admire today, whether they are entrepreneurs, influencers, CEOs, or changemakers, use their free time wisely. They turned their evenings, their weekends, and even those boring hours into a foundation for their dreams. And the good news is you can do the same. Today, I will share with you the 5 best skills you can learn in your free time. These skills will not only give you knowledge and confidence, but they can also help you make money, even as a student, right here in India. So stay with me till the end, because if you take these skills seriously, they can completely change your career, your opportunities, and your future. The power of skills over degrees. Before I dive into the skills, let me give you one golden truth. In today's world, degrees are important, but skills are powerful. You may have a degree, but without practical skills, you may still struggle to get a job. On the other hand, even if you are still studying, if you have strong skills, you can earn, you can freelance, and you can create opportunities for yourself. So never underestimate the power of skills. They are your true assets. Skill 1. Digital marketing. The first skill I want to talk about is digital marketing. We are living in the digital era. Every business, every company, every shopkeeper, and even every individual wants to grow online. They need people who know how to promote products, run ads, manage social media, and build online communities. If you, as a student, learn the basics of digital marketing like SEO, social media marketing, and content creation, you can start freelancing, you can manage Instagram pages, you can help local businesses, and you can even start your own online projects. The best part? You can learn this skill absolutely free through YouTube tutorials, free courses, and practice. All you need is curiosity and consistency. So my question to you is, why just use Instagram for entertainment when you can use it to build a career? Skill 2. Graphic designing. The second skill is graphic designing. Think about it, every company needs posters, banners, logos, thumbnails, and eye-catching designs. Social media thrives on visuals. And guess who creates them? Graphic designers. With free tools like Canva, and advanced ones like Photoshop or Illustrator, you can design almost anything. If you learn this skill, you can start offering services on platforms like Fiverr and Upwork, or even within your own community. Students who master graphic designing often start by making posters for school events or thumbnails for YouTubers. Slowly, they build a portfolio and start charging for their work. And here's the secret, you don't need to be a born artist. You just need to practice, experiment, and learn from free resources. Skill 3. Coding and web development. The third skill, and perhaps one of the most valuable today, is coding and web development. The world is run by technology. Apps, websites, and software are part of our daily lives. Companies are always looking for coders, and freelancers are always in demand. You can start with simple languages like Python or JavaScript, or even learn website building through HTML, CSS, and WordPress. Once you understand the basics, you can build websites for local businesses, or even launch your own app ideas. Just imagine, while others are wasting their evenings, you could be building something that people actually use. And here's the beauty of coding, you don't need to invest huge money. There are hundreds of free online courses, coding challenges, and practice platforms waiting for you. Skill 4. Video editing. The fourth skill is video editing. Look around YouTube, Instagram Reels, TikTok, advertisements, video content is everywhere. And behind every good video, there is a skilled editor. If you know how to use editing software like CapCut, Filmora, or Adobe Premiere Pro, you can earn money by editing videos for YouTubers, content creators, and even businesses. Students often start by editing their own videos or helping a friend. Slowly, they turn it into a side hustle. Some even turn it into a full-time career. And here's something powerful, the creator economy is booming. Every day, thousands of new YouTubers and influencers start their journey, and all of them need editors. You can be the one they hire. Skill 5. Content writing and blogging. The fifth skill is content writing and blogging. Words have power. They can educate, inspire, and sell. Companies, websites, and startups are always searching for people who can write well, whether it's blog posts, website content, scripts, or even product descriptions. If you enjoy writing, this is a golden opportunity. You can start by writing for free, building a portfolio, and then offering your services as a freelancer. And here's a bonus, if you start your own blog and keep writing consistently, you can later earn through ads and sponsorships. In short, if you have the ability to express thoughts clearly in words, you already have a powerful income skill in your hands. The bigger message. Now, my dear friends, you may be wondering, can I really do this? Can I really learn these skills and earn money while still being a student? The answer is a big yes. You don't need to wait for your degree. You don't need to wait for permission. You just need to start. Every expert you see today was once a beginner. They made mistakes, they practiced, and they improved. The only difference between them and others is that they used their free time wisely. So, if you are serious about your future, stop wasting time. Pick one skill from the 5 I mentioned: digital marketing, graphic designing, coding and web development, video editing, or content writing. Learn it step by step. Give it at least 1 hour daily. In a few months, you will see yourself growing. In 1 year, you will have a strong skill. And in a few years, you will have opportunities that others can only dream of. Conclusion, the call to action. Let me end with this thought.
India today is a land of opportunities. With the internet in your hands, you can reach the world. But the question is not what India will give you, but what you will create with your skills. So, my dear students, my dear friends, make a promise to yourself today. Promise that from this very moment, you will not waste your free time. Promise that you will invest it in learning, in practicing, and in building a brighter future. Because remember, skills pay the bills. And once you master these skills, your free time will no longer be free, it will become the foundation of your success. Thank you, and I wish you all the best on your journey to becoming skilled, independent, and successful. मेरे अजीज तलबा, मेरे दोस्तों और मेरे फ्यूचर लीडर्स ऑफ इंडिया, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल करने जा रहा हूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। आप अपना फ्री टाइम कहां स्पेंड करते हैं? क्या आप अपना वक्त सिर्फ मोबाइल पर स्क्रोलिंग करते हुए, रैंडम वीडियोस देखते हुए या यूजलेस गॉसिप में जाया करते हैं? आप अपना फ्री टाइम वाइजली यूज करते हैं ताकि आपके पास वो स्किल्स हों जो आपके फ्यूचर को ब्राइट बनाएं। याद रखें, फ्री टाइम एक गिफ्ट है। अगर आप उसे सही यूज करें तो ये आपको कामयाबी देगा, और अगर जाया करें तो ये आपके ख्वाबों को बर्बाद कर सकता है। स्किल्स vs डिग्रीज। आज के जमाने में सिर्फ डिग्रीज काफी नहीं है। डिग्रीज इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन स्किल्स आर मोर पावरफुल। एक स्टूडेंट अगर सिर्फ डिग्री लेगा और उसके पास कोई प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं होंगे तो वो मार्केट में स्ट्रगल करेगा। लेकिन अगर इसी स्टूडेंट ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स भी बिल्ड की तो वो फ्रीलांसिंग कर सकता है, अर्न कर सकता है और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। इसीलिए मैं आज आपके साथ 5 बेस्ट स्किल्स शेयर करूंगा जो आप अपने फ्री टाइम में सीख सकते हैं। ये स्किल्स सिंपल हैं, फ्री रिसोर्सेज से सीखे जा सकते हैं और सबसे बढ़कर ये आपको अर्निंग के साथ साथ कॉन्फिडेंस लाइड एक ओपनिंग। मेरे अजीज तलबा, मेरे दोस्तों और फ्यूचर लीडर्स ऑफ इंडिया, आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आप अपना फ्री टाइम कहां स्पेंड करते हैं? क्या आप सिर्फ मोबाइल पर स्क्रोलिंग करते हैं या अपने स्किल्स बिल्ड करते हैं? याद रखें, फ्री टाइम एक गिफ्ट है। अगर वाइजली यूज करें तो कामयाबी, अगर वेस्ट करें तो नाकामी। स्लाइड 2, स्किल्स vs डिग्रीज। आज के जमाने में डिग्रीज इंपॉर्टेंट हैं, मगर स्किल्स आर मोर पावरफुल। डिग्री आपको क्वालिफाई कराती है, मगर स्किल्स आपको अर्न कराते हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। स्लाइड 3, स्किल 1, डिजिटल मार्केटिंग। पहला स्किल है डिजिटल मार्केटिंग। आज हर बिजनेस ऑनलाइन ग्रो करना चाहता है। सीओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन सीखकर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेजेस मैनेज करें, स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करें और अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। बेस्ट पार्ट यह है कि ये सब आप फ्री रिसोर्सेज से सीख सकते हैं। स्लाइड 4, स्किल 2, ग्राफिक डिजाइनिंग। दूसरा स्किल है ग्राफिक डिजाइनिंग। कंपनीज को पोस्टर्स, लोगोज, बैनर्स और सोशल मीडिया डिजाइन्स चाहिए। कैनवा जैसे फ्री टूल्स से आप इजीली डिजाइन कर सकते हैं। शुरू स्कूल पोस्टर्स से करें, फिर यूट्यूब थंबनेल्स और आखिर में फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स। ग्राफिक डिजाइनिंग हमेशा डिमांड में रहती है। स्लाइड 5, स्किल 3, कोडिंग वेब डेवलपमेंट। तीसरा स्किल है कोडिंग वेब डेवलपमेंट। दुनिया डिजिटल है और कोडेंस की हमेशा डिमांड है। पाइथन, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS और वर्डप्रेस सीखकर आप वेबसाइट्स और एप्स बना सकते हैं। स्टार्ट स्मॉल, किसी लोकल शॉप या स्कूल के लिए वेबसाइट डिजाइन करें। कोडिंग स्किल्स भी डेवलप करती है। स्लाइड 6, स्किल 4, वीडियो एडिटिंग। चौथा स्किल है वीडियो एडिटिंग। यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स और एड्स सबको एडिटर्स चाहिए। आप प्रीमियर प्रो सीख ले तो आप क्रिएटर्स के लिए वीडियोस एडिट करके अर्न कर सकते हैं। क्रिएटर इकोनॉमी बूम पर है, रोजाना नए यूट्यूबर्स स्टार्ट होते हैं। एडिटिंग सीखकर आपके पास क्लाइंट्स की कमी नहीं होगी। स्लाइड 7, स्किल 5, कंटेंट राइटिंग ब्लॉगिंग। पांचवा स्किल है कंटेंट राइटिंग ब्लॉगिंग। वर्ड्स इंस्पायर करते हैं, एजुकेट करते हैं और सेल भी करते हैं। ब्लॉग राइटिंग, फ्रीलांसिंग, वेबसाइट कंटेंट और कॉपीराइटिंग से आप अर्न कर सकते हैं। स्टार्ट राइटिंग फॉर फ्री और फिर पोर्टफोलियो बिल्ड करें और क्लाइंट्स को अप्रोच करें। ऑन ब्लॉग बनाकर आप एड्स और स्पॉन्सरशिप से भी अर्निंग कर सकते हैं। स्लाइड 8, बिगर मैसेज। शायद आप सोच रहे हैं, क्या वाकई स्टूडेंट होते हुए अर्निंग पॉसिबल है? आंसर है यस, एब्सोल्युटली यस। आपको डिग्री कंप्लीट होने का वेट नहीं करना। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था। फर्क सिर्फ यह है कि उन्होंने अपना फ्री टाइम वाइजली यूज किया। स्लाइड 9, कंक्लूजन/कॉल टू एक्शन। इंडिया आज एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। इंटरनेट ने दुनिया आपके हाथ में दे दी है। क्वेश्चन ये नहीं कि इंडिया आपको क्या देगा, क्वेश्चन ये है कि आप अपनी स्किल्स से क्या क्रिएट करेंगे। प्रॉमिस करें कि आप फ्री टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लर्निंग, प्रैक्टिस और फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे। बिकॉज रिमेंबर, स्किल्स पे द बिल्स। और यही स्किल्स आपकी कामयाबी की फाउंडेशन है, ये भी देंगे।